Hello, good evening. Good evening, everybody. Hi, dear students. आप सब कैसे हो? I hope you are able to see me clearly. और मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है. So, how is everything? And what we are going to discuss today? Yes. Good evening. Good evening, everybody. I can see all of you. So, what we are going to discuss today? Well, we are going to discuss today the solar system. राइट सोलर सिस्टम के बारे में हमको क्या आइडिया है, आज थोड़ा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. राइट सोलर सिस्टम जहां पर हम लोग हमारा अर्थ है ना, इसमें क्या क्या सारी चीजें हैं वो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे. विल टॉक अबाउट द प्लैनेट्स, विल टॉक अबाउट द सैटेलाइट्स, देन सब प्लैनेट्स, सभी कुछ डिस्कस करेंगे, है ना. सो लेट अस स्टार्ट क्विकली. और आई होप आपने कुछ पढ़ा होगा सोलर सिस्टम के बारे में, है ना. तो हाँ, लेट मी स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन, है ना. कौन मुझे बता सकता है विच इज कॉल्ड अ रिंग्ड प्लैनेट? किस प्लैनेट को रिंग्ड प्लैनेट बोलते हैं, बताइए. किसी को पता है किस प्लैनेट के चारों तरफ रिंग सिस्टम है? हम्म yes Saturn, yes, exactly, है ना. So here is the look at this all the planets, है ना. एक बार नोटिस करिए ये प्लैनेट कैसे स्ट्रक्चर में है, किस पैटर्न में है. द फर्स्ट पार्ट यू विल सी एट द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, सेंटर ऑफ दिस सोलर सिस्टम. ये सोलर सिस्टम के बीच में जो है वो है, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना. इनको हम लोग सन बोलते हैं. राइट, दिस इज द सन, इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एंटायर सिस्टम. अब ये अगर बंद हो जाए ना कभी, तो सब कुछ बंद हो जाएगा, है ना. अब इसके बाद ना देखिए, पहला प्लैनेट जो है वो मर्क्यूरी है. यहाँ पर यू कैन सी इट, दिस इज द फर्स्ट प्लैनेट विच इज कॉल्ड मर्क्यूरी. राइट, मर्क्यूरी के बाद आप नोटिस करिए नेक्स्ट जो प्लैनेट है ये वीनस है ना. दिस इज द वीनस. उसके बाद हमारा अर्थ आता है. तो अगर आप उसको रैंकिंग करना चालू करें तो पहले में आता है मर्क्यूरी, देन वेनस, देन हो जाता है अर्थ, एंड फाइनली उसके बाद आता है क्या? मार्स. मार्स याद करिए, हमने यहीं पर तो मार्स ऑर्बिटर मिशन छोड़ रखा है. मार्स ऑर्बिटर मिशन, दिस इज द फोर्थ प्लैनेट इन दिस सीक्वेंस. राइट. अच्छा नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद ना क्या है पता है, इसके बाद कुछ ऐसे सिस्टम है जिसको हम लोग डस्ट पार्टिकल बोलते हैं. वो कुछ कुछ इस तरह से दिखता है, देखिए इट लुक्स लाइक दिस. ये यहाँ कुछ ऐसे सब पार्टिकल्स है, सब प्लैनेट्स वगैरह कुछ बोल सकते हैं आप. इनको एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एस्टेरॉयड बेल्ट. ये जो है ये मार्स को जुपिटर से सेपरेट करते हैं. मतलब यहाँ से सन से लेकर आप अगर इतना तक जाएंगे, इसको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स. दे आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स. यहाँ से ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, यहाँ से लेकर अगर आप जाएंगे लास्ट एंड तक, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम का एंड है. हु इज बिगर देन जुपिटर? हाँ, निशित इज बिगर देन जुपिटर. ऑलराइट, दैट्स गुड. चलिए, तो यहाँ ये जो लास्ट प्लैनेट है ना हमारा, जिसको हम लोग यूरेनस बोलते हैं, उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो आपको एक और बेल्ट मिलेगा. दिस इज कॉल्ड द क्यूपर बेल्ट, है ना. एक तरफ तो एस्टेरॉयड बेल्ट है, उसके बाद दूसरा वाला जो बेल्ट है ना उसको क्यूपर बेल्ट बोलते हैं. दिस वन, ये एंड में है पूरा, ये वाला. ओके, तो ऐसे हमारे मीन्स द पॉइंट ऑफ स्पीकिंग इज दैट कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी बाउंड्री लाइन कहाँ तक है. देखिए ये बाउंड्री लाइन है, दिस इज द बाउंड्री लाइन. ऑलराइट, दिस इज द बाउंड्री लाइन ऑफ द सोलर सिस्टम. मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक हम लोग जाएं तो ये हो जाते हैं इनर प्लैनेट्स बोलते हैं इसको. और यहाँ से जुपिटर से लेकर अगर एंड तक हम लोग जाएं तो इसको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स. दे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स. अच्छा, इनर प्लैनेट जो होते हैं ना उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं. दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. अब ये जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं ना उनको गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड गैसियस प्लैनेट. तो
या तो आप आउटर प्लैनेट बोलिए या तो गैसियस प्लैनेट बोलिए। इनको इनर प्लैनेट बोलिए या तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलिए, ठीक है। अच्छा, व्हाट एल्स? हाँ, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, यस यू आर राइट विद दिस। लोपा पटनायक, आई होप दिस इज योर नेम। हाँ, जुपिटर इज बिगर, यस, बिगेस्ट वन इन द सोलर सिस्टम। अच्छा, इनको ना जो जो सारे मर्क्यूरी से लेकर आप अर्थ तक देख रहे हो ना, ये सारे ना दे हैव सम रॉकी सरफेस, मतलब उसके ऊपर अगर कुछ लैंड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जुपिटर से लेकर नेपच्यून तक जो सारे प्लैनेट है ना, ये गैस से बने हुए हैं, मतलब दे डोंट हैव एनी टेरेस्ट्रियल सरफेस, हार्ड सरफेस है नहीं। ओके, तो इसमें ये है कि इनको ना जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स। रिमेंबर, मैं ये जो सारे अलग अलग नाम लिखवा रहा हूँ उनको आप एक बार नोट देम समवेयर। ओके, अब जो ये इनर प्लैनेट को आउटर प्लैनेट से जो सेपरेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एस्टेरॉयड बेल्ट, दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड बेल्ट, है ना। जो आउटर प्लैनेट को सोलर सिस्टम का एंड जो है उनको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, दे आर कॉल्ड क्यूपर बेल्ट, है ना। तो दिस इज अबाउट समथिंग अबाउट द सोलर सिस्टम। इसमें और देखिए, अगर हम लोग जुपिटर देखें, दिस इज द प्लैनेट विच इज कॉल्ड जुपिटर, दिस इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। हम्म ओके, स्वरूप, यू आर आस्किंग व्हाट आर ब्लैक होल्स, विल टॉक अबाउट दैट लेटर, है ना। अभी थोड़ा आपका क्यूरियोसिटी को अपने पास रखिए, थोड़ा संभाल के, विल टॉक अबाउट इट लेटर, है ना। इट्स गुड। चलिए, तो जुपिटर हो गया क्या ये। देन नेक्स्ट प्लैनेट इज द सैटर्न, इसमें इसके चारों तरफ रिंग्स है। देन वी हैव द यूरेनस, देन फाइनली नेपच्यून। अच्छा, व्हाट अबाउट प्लूटो? प्लूटो वाज अर्लियर ए प्लैनेट बट नाउ यू सी प्लूटो इज नो मोर ए प्लैनेट। ये प्लूटो है, मान लीजिए प्लूटो जो है 2000, द ईयर वाज 2006, है ना। इस ईयर के बाद से प्लूटो को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या किया? डिग्रेड कर दिया, अब वो प्लैनेट नहीं है। तो हमारे सोलर सिस्टम में यू कैन सी देर आर टोटल 8 प्लैनेट्स। ओके, 8 प्लैनेट्स हैं, और टोटल 5 जो है ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लूटो अभी क्या है? व्हाट इज प्लूटो? प्लूटो इज ए ड्वार्फ प्लैनेट, है ना। चलिए, सो लेट मी मूव ऑन, और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके क्लियरली डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट प्लैनेट देखिए, पहला जो है, विच इज द सेंटर ऑफ दिस सोलर सिस्टम, दिस इज द सन, यू कैन सी इट, है ना। सन को स्टडी करने के लिए हमने अभी कुछ लॉन्च किया है क्या? इसरो ने सन को स्टडी करने के लिए कुछ लॉन्च किया है, बताइए। इसरो हैज सेंट समथिंग टू स्टडी द सन, वो क्या है मुझे मैसेज करके बताइए, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर ना कुछ देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं, आई होप यू कैन सी देम। यहाँ पर दीज आर सम ब्लैक स्पॉट्स, ये है, ये है, ये है, राइट। तो ये हो जाता है क्या? दीज आर ऑल कॉल्ड सन स्पॉट्स, दे आर ऑल कॉल्ड सन स्पॉट्स। ओके, व्हाट इज सन? बेसिकली सन इज ए, इट इज ए मास ऑफ गैसेस, है ना। यहाँ पर कंटिन्यूअसली क्या होता है ना, हाइड्रोजन जो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, वो कंटिन्यूअसली हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, और इस प्रोसेस में दो चीजें एमिट होती हैं। एक होती है क्या? लाइट, जो हम देख पाते हैं, और दूसरा होता है क्या? हीट। ये दोनों चीजें यहाँ से एमिट होती हैं। यस, आदित्य L1 has been sent to the sun to study the sun. Yes, all of you gave the right answer, है ना। लोकनाथ, then संध्या रानी, and लोपा again, सुषमा, all of you gave the right answer। इसको स्टडी करने के लिए, सन को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 हमने लॉन्च किया है। आदित्य L1, दिस इज L1। ओके, सो दिस इज सन। अब सन में क्या क्या चीजें हैं एक बार देखिए। सो सन अपियर्स व्हाइट टू आवर आईज, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मतलब सन का कलर क्या है, दिखता कैसा है? वो सन व्हाइट ही दिखता है ना। और ये मोस्टली मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, बताइए। मतलब एटमोस्फियर के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर सन एक सेटिंग सन है, मतलब सन अगर डूब रहा होता है, तब वो रेड दिखता है।
है ना, जब मिड मतलब जस्ट एट द मिड नून, उस टाइम में वो टोटल व्हाइट दिखता है, स्पेशली इन द समर्स, है ना। तो ये कलर जो है ये ये सब्जेक्टिव है। देन सन इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 70% और हीलियम हो जाता है इसमें 20%। ओके, लाइट फ्रॉम द सन टेक्स 8 मिनट्स टू रीच टू आवर सरफेस। ये तो मैंने रफली 8 मिनट्स लिखा है। आप मुझे इतना बताइए चेक करके कि हाउ मच टाइम द sun's energy or the lights they take to reach the earth, एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है वो बताइए मुझे। 8 मिनट्स और कुछ सेकंड्स हैं, वो एग्जैक्टली मुझे बताइए, ठीक है। मर्क्यूरी, तो द फर्स्ट planet in this solar system mercury, you can see, and perhaps the smallest one. Okay, अब mercury does not have any moons and rings, तो इसके बेसिक फैक्ट्स क्या क्या हो जाते हैं देखिए। इसके कोई मून भी नहीं है और रिंग भी नहीं है, पहला बात। 8 minutes and 20 seconds, yes Gayatri, you're right, 8 minutes 20 seconds. Okay, all of you, again this is the correct answer, right? अच्छा, next, mercury is the closest planet to the sun, ये तो हमको पता है। the solar day on the surface of mercury lasts for 176 earth day, है ना। सोलर डे मतलब ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, अर्थ को ऐसे उसके लैटिट्यूड्स वगैरह है, अर्थ को अपने चारों तरफ घूमने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 hours, just to revolve around itself, right? The earth takes 24 hours or exactly 23 hours or 46 minutes कुछ seconds हैं। So you see in case of mercury it takes 176 days that to rotate around itself. It takes 176 days. Okay, a year on mercury is about 88 earth days, मतलब वहां पर 88 दिन में वो घूम के आता है। यहाँ पर whereas you see earth, in the case of earth we take 365 days. The earth takes 365 days to rotate around the sun. That is a complete revolution around the sun, whereas this mercury takes 88 days. It is also called gray planet. You see, whatever is the question, I have marked it in in bold letters or any other color. Okay, so this is a question which is called gray planet. नहीं, अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो आपके दिमाग में गया? कैन यू इंटरनलाइज इट? हमने जो जो अभी तक डिस्कस किया। Shall we move ahead then? धरित्री पंडा 365 and 1/4 day, नहीं 364, हाँ 365 and 1/4 day exactly. Alright, चलिए let us move on then. So this is Venus then, the second planet Venus, है ना। इसको शुक्र भी बोलते हैं, हाँ। This is also called in Hindi or in Devanagari, this is also called शुक्र। Alright, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने देखिए चंद्रयान भेजा, we have sent Chandrayaan 1 2 3, okay, then we sent the Mangalyaan, that is Mars orbiter mission. Then finally we are now in the process of sending Shukrayaan. Very soon we are going to launch Shukrayaan, मतलब इस planet को study करने के लिए हम लोग एक शुक्रयान भेजने वाले हैं। ऑलराइट, तो इसीलिए इसका नाम मैंने हिंदी में बताया। ओके, वेनस। अब वेनस डज नॉट हैव एनी मून और रिंग, नेचुरल सी बात है। वेनस इज नियरली एज बिग एज अर्थ, इसको बोलते हैं ना अर्थ्स ट्विन। विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ्स ट्विन? Earth's twin. Okay, a day on surface of the Venus takes around 117 Earth days, or a year around 225 Earth days, as 365 days on Earth. अब इसमें सरफेस टेम्परेचर देखिए कितना है, 471 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर हमारे भुवनेश्वर में इफ इट इज अराउंड 40 डिग्री प्लस डिग्री सेल्सियस, if it crosses 40 then we are basically in a position of uncomfortability, है ना। but in those areas, in that planet, you see what is the surface temperature, 471 degree, that is quite, it is near impossible। मतलब if in our case of ours, अगर 56 डिग्री से ऊपर हो जाता है ना टेम्परेचर, तो फिर इंसान they will not survive, they will definitely die. Okay, maximum is 56 that human being can tolerate. Okay, तो ये तो 471 डिग्री है, much higher than that, है ना। अच्छा, then it is also called brown planet. This is called morning star, evening star. This is that planet.
Why it is called morning evening star? ये in you know in olden times when there was no navigation tool, लेटेस्ट शिप्स वगैरह नहीं थी ना, तो ये क्या करते थे ना, ये गाइड करते थे नेविगेटर्स को, राइट। अच्छा, नेक्स्ट इज आवर प्लैनेट। ओके, अब at times you see there are some problems with this color, है ना। Some say this is a blue planet, some say this is a green planet, all right, but remember earth is not a green planet, earth is otherwise called a blue planet, remember। green planet earth नहीं है, अर्थ में ग्रीनरी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अर्थ ग्रीन प्लैनेट ही है। ओके, अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, रिमेंबर। व्हाई ब्लू, यू नो इट। ओके, 2/3 ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, ऑलराइट, और वाटरी प्लैनेट। देयर इज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर ओन अर्थ, ये तो पता ही है, मून। अर्थ doesn't take 24 hours, rather it takes 23 hours 56 minutes and 4 seconds. Okay, this is the exact time the earth takes to revolve around itself. Okay, then you see moon. Now this becomes a very pertinent question. Why? Because just a year before we sent Chandrayaan 3. Chandrayaan 3. All right. तो मुझे कोई बता सकता है क्या कि हमने, दैट मीन्स इसरो ने चांद पर कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स इसरो हैज टच्ड द सरफेस ऑफ मून? हाउ मेनी टाइम्स इसरो हैज टच्ड द सरफेस ऑफ द मून? ये मेरा क्वेश्चन है, और मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। ये these are all 4 options. How many times? Okay, some are saying 1 time, some are saying 3 times. अगर 3 times है तो बताइए कौन कौन से ईयर में हुआ था? How many times? Let me tell you. Okay, the first one, Chandrayaan 1. If you remember Chandrayaan 1, 2000 and the year was 2008. This was for the first time हमने क्या किया? We touched the surface of the moon. That was Mars, the Moon Impact Probe. MIP जो था ना, उसने चांद को छुआ था, और उसका एविडेंस क्या है? व्हाट इज द एविडेंस? वी हैव अ जवाहर पॉइंट देयर, जवाहर पॉइंट। ओके, देन द ईयर वाज 2019, राइट, व्हेन वी टच्ड द सरफेस ऑफ द मून फॉर द सेकंड टाइम। अब ये क्या था? ये जहां पर व्हेन द place where we landed, that was a crash landing, of course, not a success completely. That was called Tiranga Point. That is called Tiranga Point. All right, and the last one in the year 2023. All right, 2023. This is called Shiv Shakti Point. So remember, this may be a very crucial question. How many times this ISRO has touched the surface of the moon? This is 3 times. Remember, very important. Okay. Acha. So this is moon. You can see the first uncrewed mission to the moon was 1959 by the Soviet lunar program, with first crewed landing Apollo 11 1969. Correct? Okay. Then the red planet Mars. You can see Martian soil is basically rich in iron. That's why it appears red. Okay. Then you see Mars moons. What are the Mars moons? Number 1, Phobos and Deimos. Remember, this is a question. Which are all the moons of the Mars? Phobos and Deimos. These are 2 important moons of Mars. Right? Next, asteroid belt. As I said, we have 2 types of basic rings around the inside the solar system. Right? The first one is, suppose this is our sun. After sun, we have the Venus, then Mercury, then Venus, then Earth, and finally the Mars. Okay, and just after this, you will find a belt which does not contain any this planets, but they have asteroids. अब ये asteroids क्या करते हैं ना, यहाँ से origin के sun की तरफ ये लोग travel करते हैं, and while traveling, some of them they collide with the surface of the Earth. Okay, one such incident happened late in remote past. हुआ ये कि एक एस्टेरॉइड था ना, वो आके टकराया,
and that too with the Indian soil. Okay, और बन गया क्या? एक लोनार लेक, a lunar lake. Now you tell me, anyone, where is lunar lake located? Where is this lunar lake? Where is this lunar lake located? साई इसिता is saying I cannot understand. क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? बताइए, थोड़ा क्लैरिफाई करिए. Priyanshi is asking how many solar asteroids are there in the solar system. हाँ, ये एस्टेरॉइड आप खुद देखो, मुझे खुद बताओ आप. राइट, यू कैन सी n number of asteroids in this system. Alright, they are countless actually. These are all asteroids, है ना. उसमें से एक एस्टेरॉइड का नाम है बेनू. बेनू, right, where this NASA sent something. So there are countless number of asteroids. Okay, so this is about asteroid belt, है ना. All right, next one is Jupiter. Let us enter into this. Let us enter into the gaseous planet. All right, so this one is Jupiter. As you can see, Jupiter is the fourth brightest object in the solar system, है ना. एक तो सन है, दूसरा मून है, और तीसरा हमने पढ़ा that was the Venus, and finally Jupiter. All right, sun, moon, Venus, and finally Jupiter. Okay, which can be seen with the naked eyes. This is the biggest planet. अब इसमें मून कितने हैं? You have to just rectify it. All right, एक बार चेक करिए इसको. This is not 79. Remember, these number of moons are not 75 in 79 in number. There are more than that. Nowadays, आज के डेट में जुपिटर के टोटल मून हो जाते हैं कितने? 96. Please cross check it. Can anybody check and tell me whether this 96 is correct or not? How many moons are there with Jupiter? Right? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना कि Jupiter has the largest number of moons. This is not right, because Saturn has overtaken. Saturn has 146 moons. 95. Okay, this is 95. All right, thank you. Jupiter has 95 moons and Saturn has 146 moons, so which is much more than that, you know. So this is a race between all these. Okay, then one more thing. You see, what are all the four largest moons of Jupiter? Number one is Ganymede, next is Callisto, then Io, and finally Europa. All right, so NASA also sent a mission which was named after Europa mission. All right, Swaroop is asking how many stars are there. इसका आंसर कौन दे सकता है? बताइए. Answer is infinite. Right? Who has counted them? All right. NASA also sent something to that was called Juno. To study Jupiter, NASA sent a mission which is called Juno. Right? Juno, Europa, these are all missions. Then you see ringed planet. This is also called ring planet or golden planet. This is also called golden planet, remember. Okay, this one. So Saturn is the most distant planet that can be seen with naked eyes. It is named after Roman god Saturnus, which is known as Coronus. Okay, this is about this Saturn. Then Saturn's moon. Total moon kitne hai? 146 nowadays. Presently, it is not 82, it is 146. Correct? Just check it and tell me again. Right? What are all the moons of Saturn? Number one is Titan, then Enceladus, then Ipetus, then Rhea, Mimas. These are all, but the most popular one is Titan. Right? Then you see 146. Okay. 146 more. Uranus is also known as green planet. As I said, Earth is not the green planet, it is Uranus. Okay, so because of this gas which is called methane.
For this gas, it appears green. As well as you see, the temperature is quite, quite low. Then this is called the blue planet or the windy planet. This one is the Neptune, blue or windy planet. Okay. Neptune's moons, total Neptune ke moon have 14, and the leading one among them is Triton. Right. This is Triton, which is the leading moon. All right. See the next one. Neptune. Then dwarf planets. We have completed all the planets. Now let us talk about the dwarf planets. All right. As I said you all earlier, we have the sun at the center. Then we have a belt. This is called the asteroid belt. Then we have a final boundary of the solar system. This one is called the Kuiper belt. So whenever you see all this in this asteroid belt, this is the asteroid belt. Right? In this asteroid belt, we have some dwarf planets. Okay. And in this Kuiper belt, we have some, there's again some dwarf planets. So whatever this dwarf planet you can see, all the 5, they are, spreaded across asteroid belt and the Kuiper belt. All right. So you see them. Who are all they? Sirius, Pluto, Haumea, Makemake, and Eris. I repeat, Sirius, then Pluto, Haumea, Makemake, and Eris. These are all the dwarf planets. Okay, what is a dwarf planet? I tell you. Suppose we have this solar system. All right, this is the sun at the center, right? So normally a planet has to travel or has to revolve around it in this path. Suppose, but you see Pluto. What Pluto has done? Pluto revolves in this way. It has a different path of revolution. That's why Pluto has been degraded as a dwarf planet. And dwarf planets are not that big as planet or not that small as satellites. That's why they're dwarf planet. Yes, Pluto is in Kuiper belt. Exactly. This one is in Kuiper belt. All right. Then Sirius, the first one, the closest dwarf planet to the sun and is located in the asteroid belt between Mars and the Jupiter, making it the only dwarf planet in the inner solar system. All right. तो ये एक ही है, बाकी 4 जो है वो Kuiper belt में है. Sirius. Okay. Then Pluto. In 1930, it was discovered. Pluto is the second closest dwarf planet to the sun and was one point classified as the 9th planet. The Pluto is the largest dwarf planet, but only most massive, with Eris being the most massive planet. Okay, Pluto's moon then. There are 5 moons of Pluto. You see, at one point of time, because before 2005 and 6, this used to be a planet. All right, so it has 5 moons. The most important moon is Charon. Remember, this is a question of the exam. वो ना आपको ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पता है कि ये चारोन क्या है, किसका एक मून है. So it becomes a question. Then Haumea. What is this? This is the 3rd closest dwarf planet from the sun. Haumea's moons. Both Haumea's moons were discovered, and this is Namaka and Hyaka. These are 2 moons of Haumea. As I said, these are dwarf planets. Then Makemake. Makemake is another one. Is the 2nd farthest dwarf planet from the sun and the third largest dwarf planet in the entire solar system. All right. Rimi is asking, sir, I have a doubt to that. If we cannot do it any other plant, why? मैं समझ नहीं पाया आपने क्या, फिर से पूछिए क्वेश्चन. Swarnalata is asking, the planet at the celestial bodies which revolve around the sun, but in the not to consider as a planet, not small. Okay. Then Makemake. Then Eris. Eris is the most distant dwarf planet. Eris, the only known moon is Dysnomia. Correct. Then finally the outer belt. Okay, the Kuiper belt or the Kuiper belt, whatever you can pronounce it. All right. अब इसमें है क्या, एक बार बताता हूं मैं.
देखिए ये हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री है ना। इसके अंदर जो प्लैनेट्स होते हैं इनको बोलते हैं क्या, दे आर कॉल्ड, यू नो दे आर कॉल्ड ऑल द प्लैनेट्स जो इसके अंदर होते हैं। जो इसके बाहर होते हैं उनको एक्सो प्लैनेट्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एक्सो प्लैनेट्स, मतलब प्लैनेट्स विच आर आउटसाइड दिस बाउंड्री लाइन, which are outside this boundary line of the Kuiper belt or our solar system, they are called exoplanets. All right, exoplanets. So tell me one of the examples of an exoplanet. Just check and tell me if you know any of the exoplanets. Hmm. Then अब ये है कि with from the earth itself we have sent something to study the exoplanets. ऑलराइट, उसका नाम क्या है? एक तो है, एंड दीज आर ऑल सेंट बाय नासा, राइट? नासा हैज सेंट नंबर 1, एक हो गया वॉयेजर, वॉयेजर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द द न्यू होराइजन, न्यू होराइजन, राइट? The Voyager and the New Horizon, these are all sent by NASA to study the exoplanets. Okay. Hmm. Okay, I'm not still not getting the answer. I said, tell me one of the exoplanets. Hmm. All right. So, what is a comet? Let us now talk about something else. Okay. What is a comet? A comet is a very small solar system body made mostly of ices mixed with smaller amount of dust and rock. The most comets are no longer than a few kilometers across. Okay. अच्छा. Then, अब इसमें होता क्या है कि for an example, suppose Earth है. How do we see these comets? Suppose this is our Earth, right? We have an atmosphere around it and above it. All right. And as we move ahead, as we move in altitude, go up in the atmosphere. Yes, Priyanka is saying, excuse me, sir. Yes, Priyanka, tell me. Yes, yes, you ask your doubts. है ना, मैंने पूछा था, टेल मी एनी ऑफ द एक्सोप्लैनेट्स। एक हो गया प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा प्रोक्सिमा सेंचुरी बी, Proxima Centauri is one of the exoplanets. Rabindra is saying this is our first class. Sir, is this no? This is not the first class. इसके पहले वाले क्लास में हमने states पढ़ा था. All right. Alpha Centauri, yes. Proxima Centauri is also a exoplanet. Okay. Let me move then. Whenever you see a meteor, a meteor क्या करता है ना, when it enters into Earth's atmosphere, at the upper level of it the temperature is quite high. Suppose मान लीजिए 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऊपर. So अब जब ये एंटर करता है ना एटमोस्फेयर में, इट गेट्स रेजिस्टेंस, वन टेम्परेचर और दूसरा एटमोस्फेयर का रेजिस्टेंस, इट स्टार्ट्स बर्निंग. Okay, and even if it is able to reach to the Earth's surface, this is called a meteorite. मेटेओर और मेटेओराइट में फर्क ये है कि मेटेओर्स दे एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, but later due to extreme heat and extreme resistance of the atmosphere they burn. If any of them survive, then they are called meteorites. All right, others they just disappear in the night sky like dust. Okay, then what is a meteorite? As I said, meteorite is a small rocky or metallic chunk of material. ये meteorite है. All right, you see friends, this we have completed the solar system. All right, but this is not the end of the session, I tell you, है ना? अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? We can do one more thing. हाँ, so give me some time. I'm just sharing one more document so that we can see the latest of it, है ना? जैसे कि
You see the Chandrayaan mission, the Chandrayaan 1, 2, 3, and Aditya L1. All right. Recently, we sent Chandrayaan. He is saying, Sunita is asking, sir, inner planet किसका भरा है? किससे भरा है? Inner planets, see, inner planets are, they are made up of, different kind of minerals, rocks. इससे बना हुआ है. All right. So let me just share one thing with you. Let us talk about all the Chandrayaans, the Chandrayaan missions that is relevant. And I hope you can see it now. All right. Let us see Chandrayaan. I hope it is visible now. Yes, Rimi, you ask me doubts, whatever you have doubts. Earth is called the blue planet because 2/3 surface is covered with water. Yes, this is correct. Aliens are there. Okay, Rituparna is asking aliens are there. We don't know actually. We cannot say whether they exist or not. If you can see, human beings on Earth, then you can also see other human beings on other different planets. So alien हो भी सकते हैं. Sir, excuse me, Mamta is asking, Proxima Centauri is second nearest to star to Earth. Okay, Proxima Centauri B. Exoplanet में Proxima Centauri is a star. That is true. लेकिन the planet's name is Proxima Centauri B. That is the planet. Okay. कॉमेट और मेटियोर में क्या फर्क होता है? देखिए, बेसिक डिफरेंस क्या होता है, दोनों ही तो रॉक से बने होते हैं, है ना, लेकिन मेटियोर जो होते हैं ना, वो हमारे अर्थ की तरफ आते रहते हैं, राइट. ट्रीज आर सेंट मी फर्स्ट फाउंड इन अर्थ, सो ट्रीज आर ओनली फाउंड इन अर्थ. अच्छा, ट्रीज आर फाउंड ओनली ऑन अर्थ, कि ये भी अगेन दिस इज क्वेश्चन ऑफ डिस्कवरी. Because if you have life forms in other planets, so आपके पास तो ये भी ऑप्शन हो सकता है ना, they may be having trees, right? We cannot say unless and until we discover it. Okay, चलिए, so let me just just start it. Chandrayaan, all the Chandrayaan missions. Let us start the first Chandrayaan, as you can see it on the screen. हाँ, चलिए. The Chandrayaan 1 was the first lunar probe under Chandrayaan program launched by ISRO in 2008 and is completed in 2009. अब जो कनेक्शन है, मतलब जो कम्युनिकेशन है, वो ब्रेक हो गया एंड फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि ये मिशन ओवर हुआ. ओके, Rimi is asking, we cannot go to another planet on moon why? ओके, हाँ, दूसरे प्लैनेट भी हम लोग जा सकते हैं. वाई मून? शी इज आस्किंग, रिमी इज आस्किंग वाई ओनली मून. इट इज नॉट ओनली मून. यू सी, इसरो हैज लिमिटेड मनी विथ इट. सो हम लोग जो प्लैनेट को सर्च कर सकते हैं ना इस कम पैसे में, तो हमारे पास चांद का एक ऑप्शन है. वी हैव लूनर ऑप्शन. देन वी हैव आल्सो सेंट मिशंस टू मार्स. Okay, see, all these missions, they take money. All right, and in a country like India, we have scarcity of that. All right, so इसीलिए हम लोग दूसरे planet में नासा की तरह नहीं भेज पा रहे. चलिए, next you see, in this mission there was a Mars impact moon impact probe. All right, then जिस launch vehicle से इसको भेजा था उसका नाम क्या था? This was the PSLV XL C11. This was the that space satellite launch vehicle. Then you see, the mission was a major boost in India's space program. The 14th November 2008, the moon impact probe separated from the orbiter. ये separate हो गया. और what it did, इसने क्या किया basically? हाँ, so जहां it hit साउथ पोल ऑफ मून, जहां उस क्रेटर में, मतलब दैट क्रेटर वाज बेसिकली शैकल्टन क्रेटर. साउथ पोल में ना, पता है क्या प्रॉब्लम है? साउथ पोल में जो द सरफेस इज क्वाइट रग्ड, बट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर.
there is a possibility of presence of water. That's why everybody is trying to explore that part of the moon, south pole. Okay, and we also sent these missions to साउथ पोल. लेकिन साउथ पोल में चैलेंज ये है कि वहाँ की जो टोपोग्राफी है, मतलब वहाँ का जो सरफेस है वो रफ है, मतलब वो बहुत ही अनइवन है. वहां पर कुछ भी आप लैंडिंग करोगे ना, वो मतलब ये फंस जाएगा पूरा. ओके, एंड नेक्स्ट यू सी, जहां पर ये लैंड किया उसको बोला गया जवाहर पॉइंट. अजय सेड, alright, the ISRO then became fifth nation or space agency in the world to reach to the lunar surface. Okay, so this was Chandrayaan 1. Okay, यहाँ पर वाटर राइस हो सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर चंद्रयान को भेजे थे. देन यू सी द नेक्स्ट वन. ये छोटा सा इमेज है चंद्रयान का, हाउ इट एंटर्ड इनटू द लूनर ऑर्बिट. इट वाज समथिंग कि आपने जो एक मिशन मंगल करके एक मूवी आई थी, आई होप आपने देखी होगी, उसमें जैसा उन्होंने पिक्चराइजेशन किया था, ये कुछ कुछ वैसा ही है. देन चंद्रयान 2, दिस इज द सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन. एंड इसमें क्या था, एक बार नोटिस करिए. चंद्रयान 2 ऑल्सो कैरिड, लेट मी टेल यू वन थिंग, है ना, कभी भी अगर कोई भी प्लैनेट को हम लोग स्टडी करेंगे ना, तो वहां पर 3 तरह की चीजें भेज सकते हैं. क्या क्या हो सकता है, लेट मी टेल यू. ऑलराइट, कभी भी कोई भी अगर कोई किसी प्लैनेट को स्टडी करना चाहे तो उसको क्या भेज सकता है. एक तो ये हो सकता है वहां पर हम लोग स्पेस प्रोब भेजें. सो चंद्रयान इज बेसिकली स्पेस प्रोब. तो ये जो है वो स्पेस प्रोब क्या करता है, वहां पर जाके ऑर्बिट करता है. उसको ना स्पेस प्रोब बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेस प्रोब. ऑलराइट, स्पेस प्रोब क्या करता है, उस प्लैनेट के चारों तरफ जाके ऐसे घूमता रहता है सर. इट कैन नॉट टच द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट. ऑलराइट, दूसरा जो हम लोग भेजते हैं, दिस इज नंबर 1 स्पेस प्रोब. दूसरे को बोलते हैं लैंडर. लैंडर मतलब वो क्या करता है, उसी सरफेस के ऊपर जैसे जाके ऐसे पड़ा रहता है. इट कैन नॉट मूव, इट कैन नॉट मूव, लैंडर. तीसरा होता है रोवर. दिस इज कॉल्ड रोवर. रोवर में ना व्हील्स लगे रहते हैं ऐसे. इट हैज व्हील्स, इट हैज कैमराज एंड ऑल. ओके, दैट मींस इट कैन मूव अराउंड. तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किससे होता है, ऑफ कोर्स रोवर से ही होगा. हम्म All right. See, Ravindra, you are asking for the recording of the first class. Actually, this is a YouTube recorded session. तो आप YouTube में check करिए, you will find the video. It is already there. Okay. चलिए next देखिए. तो we are actually talking about Chandrayaan 2 now. अब इसमें ना एक विक्रम था. विक्रम is a lander. विक्रम is a lander and प्रज्ञा is a rover. I hope you know right now what is a lander and what is a rover. Acha, what is the objective of the mission? It was to map and study variations in lunar surface temperature. Okay, and the most important, lunar water. जेट से इसको भेजा गया था, that was July 22, 2019, and LVM-3 रॉकेट से भेजा गया था इसको. हाँ, इसको बोला जाता है क्या, दिस इज कॉल्ड द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल M3 Mark 1. इससे इसको भेजा गया था. राइट, इट वाज अगस्त 20, मतलब जुलाई 22 में भेजा, और अगस्त 20, 2019 में इट हैड टू सॉफ्ट लैंड नियर द साउथ पोल. द विक्रम लैंडर हैड टू लैंड, बट ड्यू टू मिसफॉर्च्यून बोल सकते हैं, या तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कुछ भी हो, वी कुडंट डू दैट. ओके, लैंडर crashed at the Tiranga point. As I said, the first point was Jawahar point, then it was Tiranga point. All right, and that too land on 6th September 2019, just because of some software glitch. So it was like this. But it does not mean कि चंद्रयान 2 जो है वो फेलियर हो गया था. It was not a complete failure. चंद्रयान 2 में क्या था, चंद्रयान 2 में 3 चीजें थी ना. एक था प्रोब, एक था लैंडर, there was a lander as well. Third one was a rover. Now you see which component failed. Basically this component failed, this actually crash landed. All right, but ये चंद्रयान 2 का वो जो स्पेस प्रोब था वो तो अभी भी काम कर रहे हैं, है ना. So this is about, you see, Chandrayaan 2. So this crash landed and partially ये failure हो गया था ये प्रोजेक्ट.
Okay, then comes the Chandrayaan 3, the latest one. It is India's third lunar mission. And the objective was to make a soft landing at the moon's south pole. अब इसने टेक ऑफ किया कब? 14 जुलाई 2023 श्रीहरिकोटा से इसको इसने टेक ऑफ किया. अब इसमें था क्या? एक था इंडिजिनस लैंडर मॉड्यूल, दैट इज LM, propulsion module and the rover. Okay, अच्छा, mission objectives of Chandrayaan 3. What were all the objectives? To demonstrate safe and soft landing at the lunar south pole, rover roving around, and in situ scientific experiment. मतलब वो वहां पर जाके क्या करेगा? कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेगा. अच्छा, somebody is asking who are aliens. Aliens are those living beings who are not of our planet. और या तो हमारे धरती के जो लिविंग बींग्स नहीं है वो एलियन है हमारे लिए. All right, we have two kinds of living beings on this planet. All right, there are plants and there are animals. अब अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें, so as we can see elephants, then tigers, they are wild animals हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, है ना. हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं. हमको छोड़ के अगर किसी और के प्लैनेट वाले किसी एनिमल को हम लोग देखें, दोज आर कॉल्ड एलियंस फॉर अस. मतलब जो हमारे नहीं है. ओके, दे आर एलियंस. देन नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स? इसमें अगेन देखिए, कुछ कुछ बहुत सारी चीजें सेम थी. जैसे विक्रम लैंडर था और प्रज्ञा रोवर थी एज एट दैट ऑफ द चंद्रयान 2. लेकिन हमने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट से कुछ सीखा था. और वो हम लोग रिपीट नहीं करना चाहते थे. अब इसमें देखिए ये सारी चीजें हैं. देन तो अब इसमें क्या था? जब वो लैंड करेगा तो ना उसको एक प्रॉपर स्पीड में लैंडिंग करवाने के लिए देयर वाज ए लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर उसमें फिक्स कर दिया था. ओके, एलियंस आपने पूछा, मैंने बताया ना आपको हु आर एलियंस. एलियंस जैसे मैंने बताया, एलियंस आर नॉट ऑफ आवर प्लैनेट, दे आर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स. हो सकता है हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के भी हों. ओके, देन अब ये जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो LVM-3 M4 लॉन्चर था. राइट, इट एंटर इनटू एलिप्टिक ऑर्बिट. अब इसने टोटल कितने दिन टाइम लिया? 42 डेज. ओके, अगस्त 2023 में इसने क्या किया? सॉफ्ट लैंडिंग की. ऑलराइट, अब इसने द लैंडर एंड द रोवर विल हैव ए मिशन लाइफ ऑफ 14 अर्थ डे. मतलब जो हमारे यहाँ से 14 डेज तक वो वहां पर घूमेंगे. मतलब मून का एक दिन और इधर का 14 दिन. जहां लैंड किया वो थे शिव शक्ति पॉइंट. ऑलराइट, इट लुक्ड लाइक दिस LVM-3. राइट, this is the lander module and the rover. What is importance of landing near the south pole? अभी यहाँ पर सरफेस मतलब सॉलिड आइस है. और लाइफ फॉर्म मिलने के चांसेस ज्यादा है. यहाँ पर टेम्परेचर जो है -230 डिग्री सेल्सियस तक होता है. राइट, एंड नाउ यू सी टाइप्स ऑफ मून मिशंस. टाइप्स ऑफ मून मिशंस. ऑलराइट, एक है यू कैन सी द फ्लाई बाइज. ओके, फ्लाई बाई मतलब जो उस प्लैनेट को मतलब क्रॉस करके चला जाता है. ठीक है, दूसरे होते हैं ऑर्बिटर्स, जैसे मैंने बताया आपको. देन इम्पैक्ट मिशंस होते हैं. देन यू सी ह्यूमन मिशंस टू मून. पहला द फर्स्ट वन वाज बाय नासा इन 1969 एंड 72. नासा आर्टेमिस 3 ये जो है दूसरा नेक्स्ट जाने वाला है वहां पर. राइट, आर्यभट्ट, भास्कर, इनके बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा. चंद्रयान 1, मंगलयान, ये सारे हमने भेज रखे हैं. ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट, ये आपको नहीं चाहिए आपके क्लास के हिसाब से. देन लूना 25, यस यू जस्ट नो अबाउट इट. हमने भी द डेट वाज 23 अगस्त 2023. जस्ट उसके कुछ दिन पहले रशिया ने लूना 25 लॉन्च किया था. वेरी फ्यू पीपल नो इट. ओके, अब इसमें क्या है? इट हैड टू लैंड देयर ऑन August 20.
हम चंद्रयान 3 कब लैंड करवाने वाले थे? चंद्रयान 3 हमको लैंड करवाना था अगस्त कब? अगस्त 23। ओके, और ये था अगस्त 20। तो अगस्त 20 में क्या हुआ, इसने क्या किया ना, लैंड किया, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और वो क्या कर गया, वहीं पर क्रैश हो गया। राइट। हाँ, सॉरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस फ्रेंड्स। हम्म So what I was saying, Russia just landed, tried to land a lander just a few days before it on August 20, but it failed. अब उसका भी प्रेशर हमारे ऊपर था कि रशिया इतना बड़ा कंट्री होने के बाद भी अगर नहीं कर पाया तो हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, लेकिन इसरो डिड इट क्वाइट वेल। ओके, कम बजट में इसको लैंड करवाया। ऑलराइट। सो ये जो LVM-3 है जो उसको लेके गया था, उसके बारे में, दिस इज कॉल्ड GSLV Mac 3। दिस इज द प्रोपल्शन व्हीकल जो उसको लिफ्ट ऑफ करके लेके गया। हम्म और मून, मून के बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया। दिस इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, द मून। अब मून का नाम ना, एक वर्ड है, ब्रिटिश वर्ड है, उसको बोलते हैं मोना। मोना से लिया गया है ना। जो रशियंस हैं वो उसको मून नहीं बोलते हैं, वो उसको लूना बोलते हैं, है ना। दे कॉल इट लूना। मून ऑर्बिट्स अराउंड 27.3 days। हाँ। देन यू सी ऑलवेज द मून हैज टू साइड्स। हाँ, एक होता है सेम साइड जो नियर साइड है, और जो हमेशा अर्थ की तरफ, जो हम लोग अर्थ से मून को देखते हैं ना, तो आप देखना हमेशा एक ही साइड मून का दिखता है। ऑलराइट, ये हो गया, ये नियर साइड है। लेकिन उसके ऑपोजिट में एक फार साइड भी है ना। और फार साइड जो है वो हमेशा डार्कनेस में रहता है। राइट। तो इसीलिए वहां पर टेम्परेचर कम होता है। द नियर साइड ऑफ द मून इज मार्क्ड बाय डार्क वोल्केनो, volcanic maria or the seas. Hmm. Then both moon's prominence in the sky and its regular cycle of phases have provided cultural references. Luna 2 spacecraft in 1959 was the first artificial object to reach the surface. Hmm. Our first successful soft landing was by Luna 9 in 1966. All right, and only human lunar missions to date have been by United Nations Apollo program 1969-72. We have already discussed all these things. All right. और भी एक चीज है, मून इज द ओनली सेलेस्टियल बॉडी जिसमें हम लोग अर्थ से ह्यूमन बींग्स को भेज सके हैं। हम्म then how this moon word has been derived, as I said, there is an English word, that is called Muna. Hmm. So this is it friends, today we had to discuss this much. ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। आई होप दिस वाज एन एंटरटेनिंग सेशन एंड दिस वाज ए इंफॉर्मेटिव सेशन, मोर प्रिसाइजली। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग, यू पार्टिसिपेटेड एनर्जेटिकली। यस रिमी, आई विल सेंड इट। ओके, आई विल सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, डोंट वरी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे। ओके, so thank you so much again for your energetic participation. You all answered very well, and thank you all again, and good night to everybody. We will meet in the next class with yet another topic. All right, thank you so much. Bye bye everybody, good night. Good night all. Good night, take care everybody. We'll meet again in the next class with yet another informative session. All right, chaliye, good night everybody.